अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स। इसका ये थर्ड पार्ट है। In early two parts we learned about the structure of sugars and the nitrogenous bases. Now we know that sugars present in the nucleic acids are the sugar could be a ribose in case of RNA, and it could be deoxyribose in DNA. Now we know the difference between ribose and deoxyribose sugars, and we learned about the nitrogenous bases. Now the nitrogenous bases, we know there are two types, pyrimidines and purines. Three types of pyrimidines present in nucleic acids are uracil, thymine and cytosine, and two types of purines present are adenine and guanine. Now here, when a sugar combines with nitrogenous base, a unit is formed and that is called the nucleoside. So remember, a nucleoside is the combination of a sugar, it can be ribose or deoxyribose, and the nitrogenous base. So if we have learned regarding the structure of the sugar, let us draw this as a sugar unit, and this is a pentose sugar, carbon number 1, carbon 2, carbon 3, and this is the carbon 4, the form of CH2 with an OH group. At position number 1 there is OH group, at position number 2 and at position number 3 there are also OH groups in case of ribose, but in deoxyribose there is only the hydrogen, that is oxygen, has been removed. Now this is the sugar, and a nitrogenous base, whether it is pyrimidine or it is purine. Now the pyrimidine single ringed and purine is double ringed nitrogenous bases. Now in pyrimidines we have learned, let this be a nitrogenous base, and this nitrogenous base, let this be nitrogen number 1 in case of pyrimidines, or it may be nitrogen number 9 in case of purines. जैसे कि हमने आपको पहले ही उस वीडियो में ये बताया कि these positions in the nitrogenous base are very important. Nitrogen number 1 in case of pyrimidines and nitrogen number 9 in case of purines. Here we have seen in the structure that this nitrogen is possessing an hydrogen atom with it to fulfill its valency. Here, when this OH and this H combine, they produce the water, and the reaction here is called the condensation reaction. Here there is formation of a water molecule, and this formation of water molecule between these two, that is carbon and nitrogen, form a linkage or a bond. This is called the glycosidic linkage. Glycosidic linkage or glycosidic bond. So यहाँ पर जो बात हम याद रखेंगे कि नाइट्रोजनस बेस लिंक होती है शुगर के साथ. शुगर राइबोज भी हो सकता है, डिऑक्सीराइबोज भी, नाइट्रोजनस बेस कोई भी हो सकती है. इट कुड बी ए पायरिमिडीन, इट कुड बी ए प्यूरिन. लेकिन ये बात जरूर याद रखनी है कि नाइट्रोजनस बेस अगर पायरिमिडीन है तो उसका नाइट्रोजन नंबर 1, दैट इज N1, और अगर नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन है तो उसका नाइट्रोजन नंबर 9. इस कार्बन नंबर 1 जो शुगर का है, इसके साथ ये लिंकेज करता है, एंड द लिंकेज डेवलप्स हियर is due to the condensation reaction, and this is between carbon and nitrogen, and such linkages are called glycosidic linkages. Now a nitrogenous base combines with a sugar, forms a unit that is called the nucleoside. Now here, if the sugar is ribose and any nitrogenous base, the nitrogenous bases could be here adenine, guanine, cytosine and uracil, not the thymine. And then sugar is deoxyribose and nitrogenous bases which can combine with it adenine, guanine, cytosine and thymine, not the uracil. Now this ribose sugar is present in one of the nucleic acids, that is called ribonucleic acid or RNA,
and this deoxyribose sugar is present in the DNA. Now here, these nucleosides are called ribonucleosides or simply ribosides. And these nucleosides would be called as deoxyribosides or deoxyribonucleosides. Now, ribosides would be of four types. They could be adenosine or guanosine or cytidine और यूरिडीन. तो चार टाइप्स के राइबोसाइड्स या राइबोन्यूक्लियोसाइड्स बन सकते हैं, एडनिन के साथ, गानिन के साथ, साइटोसिन के साथ या यूरेसिल के साथ. सो एडेनोसिन, गोनोसिन, cytidine and uridine. But in case of this also the four types can be formed. तो इन्हें हम इस तरह नाम देंगे. This could be deoxyadenosine and दूसरा होगा deoxyguanosine. इसी तरीके से deoxycytidine, but here it would be deoxythymidine, not uridine, because uridine जो होगा वो आरएनए में होगा और यहाँ पर डिऑक्सीथिमिडीन है. तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम ओवरऑल देखेंगे 8 types of these nucleosides are formed, 4 ribosides and 4 deoxyribosides. Now here, as we know this sugar, at carbon number 5 it was an OH group and at carbon number 3 it was an OH group. But in case of this ribose sugar, at carbon number 2 there is also an OH group. Now whether this is ribose or deoxyribose, तो यहाँ पर हमने ribose को ही दिखाया है. Now here at position number 5 a phosphate group gets attached to it. अब अगर हम इसके पोजीशन नंबर 5 पे phosphate group अटैच करेंगे, so a phosphate group is H3PO4, that is phosphoric acid. This phosphoric acid in the ion form, it can readily dissociate in ionic form. लेकिन यहाँ पर इन bonds को, इन linkages को समझने के लिए मैं सीधे ही phosphoric acid लूँगा, otherwise it would be in the phosphate ion form. तो यहाँ पर अगर मैं ये OH group है तो एक phosphoric acid का मॉलिक्यूल लेंगे. देखें, this is the phosphoric acid जो यहाँ पर आया. अब यहाँ पर this OH and this OH they undergo condensation और यहाँ पर with the removal of water molecule a bond would be established, but in this bond there is an oxygen atom, and such a bond or such a linkage is called ester bond. Now this ester bond here has phosphorus on one side, so here it would be called as phosphoester bond. So can we now say that a nucleoside joins to the phosphate group with an ester bond, and the unit now produced is called a nucleotide. So a nucleotide, in other words, is the nucleoside plus a phosphate group, and a nucleoside itself is made up of a sugar plus a nitrogenous base, and these nucleotides are the basic or the monomeric units of the nucleic acids. Now here let us first try to understand how many types of nucleotides would be formed. Now here, if this is adenosine, attached to this is the phosphate group, it would become adenosine monophosphate, or we can say adenosine 5-phosphate. Adenosine 5 monophosphate, adenosine 5-phosphate, or simply adenosine monophosphate, and I will abbreviate it as AMP. Likewise, with this guanosine, if the phosphate group is attached, it would become GMP, that is guanosine monophosphate. तो इसी तरीके से अगर हम साइटिडीन को अटैच करते हैं फास्फोरस, it would become
CMP that is cytidine मोनोफॉस्फेट। तो इसी तरीके से अगर हम यूरिडीन को अटैच करते हैं फास्फेट, दैट वुड बिकम यूरिडीन मोनोफॉस्फेट और यूरिडीन 5 फास्फेट। नो, केमिकली हम इसका दूसरा नाम भी ले सकते हैं इन न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड्स का नाम, दीज आर कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइड्स। और चूंकि ये राइबो न्यूक्लियोटाइड्स है, क्योंकि इनमें शुगर राइबोज है, तो दूसरे टाइप के जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो डीऑक्सीराइबोटाइड्स होंगे या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। तो यहाँ पर फिलहाल हमने 4 देखे। दीज आर राइबो न्यूक्लियोटाइड्स आर सिंपली राइबोटाइड्स, दैट इज AMP, GMP, CMP एंड UMP। AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, लाइकवाइज ये आप जान सकते हो GMP, CMP एंड UMP। बट हियर द केमिकली इट इज एन एसिड, सो इसका हम नाम देते हैं एडिनाइलिक एसिड। तो अगर हमने इसका नाम दिया जस्ट वी आर एडिंग एक सुफिक्स में YLIC, तो इसका नाम बनता है केमिकल नेम। तो इसी तरीके से अगर आप मैं पूछूंगा आपसे GMP का नाम क्या आएगा, देन डेफिनेटली यू विल से इट इज गोनालिक एसिड। तो अगर मैं अब आपसे कहूंगा CMP, डेफिनेटली इट इज साइटिडाइलिक एसिड, likewise it would be uridylic acid। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स के हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड्स और राइबोटाइड्स। सो अब अगर हम आपसे ये कहें, तो अगर हम लाइव क्लास में होते तो डेफिनेटली मैं आपसे कहता, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा, अगर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स हैं उनके साथ फास्फेट ग्रुप अटैच करें तो वो न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, उन्हें हम कहेंगे डीऑक्सीराइबोटाइड्स या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। नाउ हियर डीऑक्सीएडेनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है, इसके साथ फास्फेट अटैच हो गया तो ये बनेगा डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो डीऑक्सीएडेनोसिन 5 फास्फेट, इसे हम यहाँ पर एब्रिवेट करेंगे DAMP। तो इसी तरीके से अगर हम अब कहेंगे DGAMB, दैट वुड बी डीऑक्सीगोनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसी तरीके से DCMP डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट, DTMP दैट इज डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो अगर हम इनके केमिकल नेम लिखें तो केमिकल नेम डेफिनेटली यही होगा कि इट वुड बी डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, इसी तरीके से डीऑक्सीगोनालिक एसिड, डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड, डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड। तो इस वीडियो में अगर ये आपको डेफिनेटली लग रहा होगा कि मैं हर पॉइंट को वाज़ह कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, एंड आई नो देयर आर माय स्टूडेंट्स, सम आर बिलो एवरेज एंड सम आर अबव एवरेज। तो ये सब के लिए है, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, then you will develop the knowledge regarding this more and more। So यहाँ तक हमने देखा how the nucleosides and nucleotides are formed। Now in our next video we will inshallah यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन कैसे करेंगे और कैसे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। Thank you very much for watching this।